So today we are trying impromptu speaking and I'll tell you more about it as we continue our business here. So before that, I need to first take you to my screen. Now let us generate a topic, a random topic. Who is your favorite entertainer, comedian, musician, actor, etc. चलो ठीक है. तो हम यही टॉपिक लेते हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकंड बिफोर मैं ये स्टॉप वॉच लगाऊं एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करें अपना बिजनेस यहाँ पे. हु इज़ योर फेवरेट एंटरटेनर, कॉमेडियन, म्यूजिशियन, एक्टर एट्सेट्रा. मेरे को ये टॉपिक वैसे पसंद तो नहीं आया बट क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है. हु इज़ योर फेवरेट. इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग क्या होती है कि तुम्हें ऑन द स्पॉट विदाउट मच प्रिपरेशन एक टॉपिक के बारे में बात करनी होती है. यूजुअली अगर मैं तुम्हें एक ऑडियंस के सामने खड़ा करूं, एक कैमरे के सामने खड़ा करूं और तुम्हें बोलूं कि भाई चल ये रहा तेरा टाइटल टॉपिक, इसके बारे में बात कर, तो मोस्टली हम में से हर कोई बैठ के स्क्रिप्ट बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है कि ये बोलूंगा फिर ये बोलूंगा फिर ये फिर ये बोलूंगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल. लेकिन बना तो हम लेते हैं बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू स्टेप ऑन द स्टेज, पिक अप द माइक एंड टॉक, उस टाइम पर दैट फर्स्ट थिंग दैट वी लूज इज आवर एबिलिटी टू एक्टिवली रिकॉल हमने जो कुछ भी बनाया था. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू लूज. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मास्टर द स्किल टू स्पीक फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर हेड. बोलते हुए सोचना है, सोचते हुए बोलना है, मैसअप नहीं होना चाहिए. क्योंकि द वट इज द नंबर वन रीजन कि तुम कैमरा शाये हो एंड यू यूज फिलर वर्ड्स, तुम पॉजेस लेते हो बहुत ज्यादा. पॉजिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, यूजिंग फिलर वर्ड्स इज. रैम्बलिंग, कुछ भी अंडरस्टैंड बोलना, दैट इज. सो अगर तुम एकदम कट टू कट प्रिसाइजली बात करनी है, देन यू नीड टू मास्टर दिस आर्ट ऑफ टॉकिंग, स्पीकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड. दिस थिंग हेल्प्स यू डू दैट. अब मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है. अब मेरे को टॉपिक पसंद नहीं आया, आई कुड एक्चुअली स्किप इट, आई कुड टेक अनदर टॉपिक. लेट्स सी अनदर टॉपिक क्या आता. अगर मैं लिखता तो जनरेट डज मनी बाय हैप्पीनेस. ओ माय गॉड, दैट्स सच अ गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट. आई कांट. मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया अपना टॉपिक. हमारा टॉपिक है हु इज माय फेवरेट एंटरटेनर, कॉमेडियन एटसेट्रा एंड वाई. आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा. वाई हम ऐड कर देते हैं, ऐसे ही कुछ था टॉपिक. मैं भूल गया, शिट. कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में तो होगा, मैं देख लूंगा. सो हाँ, बट आई वाज टेलिंग यू इज कि अब मैंने टॉपिक लिया है. नाउ आई विल गिव माई सेल्फ अबाउट 1 मिनट टू प्रिपेयर एंड उसके बाद मुझे इसके बारे में बात करनी है. मोर देन 1 मिनट एटलीस्ट. आई कैन टॉक मोर देन 2 मिनट्स एज वेल, बट हाँ वो करनी है. एंड आई एम गोइंग टू सक. दिस वुड बी अ वेरी humbling experience. But let's see how it goes. I really urge you guys to try it as well. Because तुम्हें पता लगेगा अपने बारे में. If you don't believe me, just watch me do it right now. Okay, so let's start the timer. And 3, 2, 1, go. I think I'm done. और टाइम से पहले कर ले तुम्हारे भाई ने प्रिपेयर. ठीक है, तो रीसेट करते हैं अब इसको. अब मेरे को इसके बारे में बात करनी है. मैं 1 मिनट भी कर सकता हूँ बट आई वुड रादर प्रेफर हैविंग अ स्टॉप वॉच. ओ माय गॉड, माइक से आवाज आ रही होगी नहीं, आई डोंट नो. सो हाँ, हम स्टॉप वॉच के साथ बात करेंगे इसके बारे में. ओके, सो लेट्स गो. हाँ, हु इज योर फेवरेट एंटरटेनर, कॉमेडियन, म्यूजिशियन, एक्टर एटसेट्रा. सो मैंने तो लिख लिया है. लेट्स सी कितना गंदा बोलता हूँ मैं. Okay, so my favorite entertainer is actually Andrew Tate. Now you might be wondering that Andrew Tate is a self-help guy. He is a masculine man who preaches stuff. How come I'm calling him an entertainer? Well, to me he is. If you look at his old videos, I know he might come off as someone who provides value, who teaches young men to be brave, who teaches young men how to make money, to master their emotions. But in actuality,
In actuality, he's an entertainer. And the reason why I say this is because if you look at a few of his past videos when he actually started out, his comments, his opinions, his views on different things come out as really funny. I'll give you an example. There was this one time a very big international event took place, which we all know as Grammys. And the next day, Andrew Tate posted a video where he said, well, there were Grammys yesterday. Then he was looking around as if he was finding something, as if he was searching something to show to his audience. And then he looked at the camera, straight faced, and said, well, I'm looking for fucks to give, and it seems I don't have any. And that was so funny to me. And this is just one example out of millions and many, because he has so many videos on internet that I just quoted, that I find funny and entertaining. All of his speeches and video, even though they have much greater depth and meaning to them, we have to understand that life is not something which we must take to such depth. It's not that deep. Life itself, the idea of life is not that deep. Yes, what he preaches might help people, might provide value, but if you look at it from a different perspective, you can also see it as a medium of entertainment, as a form of entertainment that he provides. And he knows it. He's actually very witty, he's actually very funny with his words. And because he has been doing this for so long, he knows what he's actually doing. And that reflects. Once you stop looking at Andrew Tate from a layman consumer who is simply taking in all who is simply taking in all his values, what he's preaching, and if you start to look at him as a creator and what he's trying to achieve through his videos, what he's trying you to believe, what he's making you feel, you then see the difference of how Andrew Tate is not just a creator, is not just a self-help guy, but also an entertainer. And that is the reason why he achieved such greater limelight back in 2024, if I'm not wrong. Almost he was the most googled man on the earth, and everybody knew about him because his takes were so controversial, his opinions, his POVs, and again, we are all very different. So it is just normal for me to find someone else's opinion funny because I don't agree with them, or even if I do, I can still find someone's opinion funny. And that is why I feel Andrew Tate is one of my favorite entertainers. आई होप दैट हेल्प्स दैट्स इट. कब तक बोला हमने? 3 मिनट इज नॉट गुड, 3 मिनट इज नॉट गुड. कुछ इसमें कोई फिक्स टाइम वैसे होता तो नहीं है. वैसे लोग ना 1 मिनट तक बोलते हैं, मैंने तो फिर भी लंबा ही बोला है. फॉर 1 मिनट ऑफ प्रेप 1 मिनट. आई डोंट नो वॉज इट गुड, वॉज इट नॉट गुड. मुझे एक्चुअल में लाइव स्ट्रीम करनी है इस चीज़ की. दिस वुड बी सो गुड लाइव स्ट्रीमिंग पे. एंड हमारा अभी का टॉपिक क्या था जो हमें अभी मिला था? रिकॉर्डिंग ऑन है? यस. डज मनी बाय हैप्पीनेस? दिस वाज अ गुड टॉपिक. आई डोंट नो कि मैं मेरे को कितनी देर के लिए बोलना चाहिए. मैं वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ इस पर कि कितनी देर के लिए मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए इसको बोलने वाले शिट को. बट इट इज़ सो गुड मैन, मुझे तो अच्छा लगा. Let me tell you guys about impromptu speaking, and you guys can judge me and tell me in the comments how did I do. And apart from that, impromptu speaking is actually this only. The more I do this, the more I become better. मैं 60 सेकेंड इज ऑब्वियसली बहुत ही कम टाइम, उतने कम टाइम में एक पूरा ओपिनियन फॉर्म करके उसको डिलीवर कर पाना. ऑल्दो मैंने तो अपने फेवर में घुमा लिया ना, एंड्रॉइड को मैंने बहुत देखा है, तो इसलिए इट वॉज काइंड ऑफ ईजी फॉर मी 3 मिनट तक भी कर पाना. आई रियली वॉन्ट, जो भी देख रहा है प्लीज ट्राई दिस. देर इज नो शेम. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई शेम नहीं इसको ऐसे अपलोड करने में. यू आर एक्चुअली ट्राइंग समथिंग. देर इज नो शेम. यू शुड नॉट एवर बी अफ्रेड और फील शेमफुल ओनली फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू. ओके, सो प्लीज इसको जरूर ट्राई करो एंड लेट्स सी हाउ यू गाइज डू. बट या आई फील आई डिड प्रीटी डिसेंट. बट देन अगेन मेरे को 50 दिन का एक्सपीरियंस है बात करने का, सो मे बी दैट्स व्हाई इट सो गुड. डिड आई डू गुड? आई डोंट नो, मे बी आई डिड. सो yes, I think that is it. This would be very helpful by the way, because when you master this art of speaking from the top of your head, you can sell anything, you can become a creator. And being an online creator is, it has so many perks and zero downside whatsoever. So I hope I was able to inspire some of you to actually pick up the camera and try impromptu speaking. And I'll continue this. I'll make sure I do this again and again until I get phenomenal at it, and you'll see me grow, you'll see me get better at it. And regular videos तो मैं डाल ही रहा हूँ, वो अलग shit है. So हाँ, I hope that was helpful. That's it.